everyone, and welcome to RSSDI Diabetes Bytes. Education to Protect Tomorrow. What a lovely theme International Diabetes Federation has chosen for this year's World Diabetes Day celebrations on the 14th of November 2022. Well, we at RSSDI also have solidarity and pledge team. We have a wonderful core team today, the leading experts and our leaders of RSSDI, who will be talking to you about why education and what is it in education that's so important for every person living with diabetes. Well, it is also said that a person living with diabetes can lead a very, very fulfilling life and have a great quality of life if he knows the most about his or her condition. So, without much ado, may I welcome our President, Dr. Brij Makkar, sir, who is Thank you, a Dr. Purvi. physician. Thank you, sir. Please join in. We also have Dr. Professor Rakesh Sahay, sir, who is a leading endocrinologist from Hyderabad. He is our president-elect. Welcome, sir. Thank you. Thank you. And we have our expert physician as well as diabetologist from the city of Pune, our very own secretary of RSSDI, Dr. Sanjay Agarwal, sir. Welcome, sir. Hi, Purvi. Hi, Purvi. Hi, Purvi. Nice to be on the show. Hello, sir. We are back to the basics, just talking about patient education. And I hand it over to our three stalwarts today to take it forward from here. Thank you very much, Purvi. And I'm going to really put Brij and Rakesh in the... Yeah, I'm going to put both presidents on the hot seat and put some probing questions on behalf of you and see what we can come up with an interesting discussion. So let me put it to both of you. I mean, you've been practicing diabetes for a long time, and I'm sure a lot of people come. They have a lot of myths, they have a lot of questions, and they obviously are seeking solutions from you. So my first question to both of you is, how does knowing more about diabetes really help somebody? Often people say, I don't want to know anything. I mean, just keep me the basic minimum knowledge, and I'm happy to follow whatever you say. Whereas on the other extreme, there are people who are always in a state of denial and don't want to sort of accept your guidance and your words of wisdom. So how do you really feel that education helps your people? So both of you can take this. Yeah, Dr. Makkar, would you go first? Yeah. Brij, you can start. Good evening, everyone. Okay. Thank you, Sanjay, for... Yes, Rakesh, go ahead. Yeah, Rakesh, go ahead. Go ahead, Rakesh. No, is Brij, there you want to some continue? No, we can hear you. You can go ahead. Brij, you want to go ahead? Just go ahead. We'll get Rakesh in later. Okay. So, see, as we know, diabetes is a lifestyle disease, and it is, once you get diabetes, you have to live with it. It is not something that is going to go away in a year or 6 months or 2 years, or maybe 10 years also. Second thing is, this is a disease which involves a lot of self-management on day-to-day basis. There are multiple aspects of lifestyle which affect your disease process, including the control of disease, the stability of disease, the progression of disease, development of complications, and development of not only acute complications, long-term complications also. And we know that diabetes is the hallmark feature is increase in blood glucose level, and this blood glucose level gets affected by eating, by exercise, by lack of exercise, by fasting,
by other drugs that you are taking. If you get any kind of sickness or illness, it affects your glucose levels. Your stress levels affect your glucose levels. Your binge eating affects your glucose levels. Your change in the eating behavior, affects your glucose levels. Eating timings, if you change, again, it affects your glucose levels. The change discrepancy between the time of medication and time of meal, again, that affects your glucose level. So practically every single thing that you're doing on day-to-day basis in your lifestyle affects your glucose level. So now you cannot, call back your physician or your educator for every small thing on daily basis to find out what is happening. Now, if you just check your sugar level and it is haywire, you have to understand why it is going haywire. And to understand that, you have to have, basic knowledge of diabetes. So it is known for, for quite some time. In fact, Professor Jocelyn, who is considered father of diabetes, said that the diabetes is best managed by people who are most educated about diabetes. So diabetes education or education about diabetes, I think one of the most important factors uh, to have a good management of diabetes, a good control of diabetes on day-to-day basis, and prevention of long-term complications, and of course to have a good quality of life. Thank you. Rakesh, I'll just, one aspect which probably Dr. Brij did not, allude to, is a lot of people are unaware that they have presence of diabetes because they've never tested their blood sugars. Do you think education in a large way would help to, pick up undiagnosed population of diabetes? And, maybe they will come into the mainstream and, follow certain practices of lifestyle and exercise and weight management. Maybe that would help to reduce the burden of diabetes early. So what's your take on that? Yeah, absolutely, Dr. Sanjay. You put it very rightly that half the people who have diabetes don't know about it. So that's because diabetes can be totally asymptomatic. Dr. Bridge has very nicely told us what exactly why we need to know more about diabetes, why we need to be aware about diabetes, and the important point is that half the people don't know that they have diabetes because diabetes is mostly asymptomatic. You may not have any symptoms at all, and you still have diabetes and you still have a high sugar level, and your organs are all sort of at risk of getting damaged. Your eyes are getting constantly affected because of the high sugar level. Your kidneys are affected and your heart is affected, and you may just present with some complication at that stage if a person doesn't know that he has diabetes. So it's very important that people should know about what are the risk factors for diabetes, who is likely to develop diabetes, and screen for diabetes. So people who have got a family history of diabetes, if you have a parent with diabetes or a sibling with diabetes, then you are at higher risk. And then if you're overweight, if you're having a sedentary lifestyle, you're sitting and working at the desk for most of your time, or if your eating habits are not very good, or if you're overweight, then all these people should get themselves tested for diabetes every year at least. After the age of 30, you would say that everybody should have a taste of diabetes, and that will help you in picking up diabetes early. And knowing about this is very important, and it's absolutely important that we know these things, and everybody should become aware of this so that we can actually identify diabetes early, treat it effectively, and make people live well with diabetes. थैंक यू राकेश. ब्रिज, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि अक्सर लोग अपने रिपोर्ट्स लेके आते हैं, और आज के टाइम पे जब काफ़ी हेल्थ चेक्स वगैरह लोग करते हैं और उनकी रैंडम ब्लड शुगर्स की जाती है, और उनके रिपोर्ट्स में पता लगता है कि उनको एक 150, 155, 160 ऐसे ब्लड शुगर आते हैं, और उनको ऐसे कोई सलाह दी नहीं जाती है. और जब हम उनकी फास्टिंग और खाने के बाद की शुगर चेक करते हैं तो ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होती है. फास्टिंग कुछ 130, 140 हो जाती है, और खाने के बाद की शुगर जो 160 के आसपास होती है, और कोई ऐसे ज़्यादा उसको अहमियत देता नहीं है. आपका क्या कहना है इसके बारे में कि इसके ऊपर कितनी अहमियत हमने देनी चाहिए है, और आगे के तौर पे इससे कुछ फायदा होता है या नहीं होता है?
बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली। पहली चीज तो यह है कि जैसे अभी डॉक्टर साय ने बताया कि ज्यादातर लोग जिनको डायबिटीज है उनको पता ही नहीं होता, मतलब आधे लोग ऐसे हैं डायबिटीज जिनको है और उनको पता नहीं है कि उनको डायबिटीज है भी, क्योंकि डायबिटीज में कोई यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज में जो ऑलमोस्ट 97% ऑफ डायबिटीज होती है। अब इससे जो पहली स्टेज है जिसको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। और अगर हम डायबिटीज का प्रोग्रेशन देखें, डायबिटीज की जो ऑनसेट ऑफ डायबिटीज देखें, तो बॉडी में जो मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स हैं, जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हैं, वो डायबिटीज जब हम डायग्नोज करते हैं उससे 10 से 15 साल पहले शुरू हो जाती है। और ग्रेजुअली वो हर इंसान जिसको डायबिटीज होती है पहले कुछ पीरियड, कुछ साल, उसके 10 से 15 साल प्री डायबिटीज फेज में निकलते हैं। उस फेज में शुगर लेवल्स बढ़ते तो हैं पर इतने नहीं बढ़ते कि उसको हम डायबिटीज कंसिडर करें। एक वो मिड रेंज में होते हैं जिसको लोग कई बार कहते हैं जी मेरे को बॉर्डर लाइन डायबिटीज है, और ये वो 150 160 वाली फिगर्स या 110 शुगर है फास्टिंग में, या 115 है या 170 है खाने के बाद, ये वो मिड रेंज वैल्यूज हैं जिनको हम प्री डायबिटीज में इंक्लूड करते हैं। अब टेक्निकली स्पीकिंग ये ठीक बात है कि माइल्ड डायबिटीज, इसको अगर हम ग्लूकोज को कंसिडर करें तो माइल्ड डायबिटीज है, बट ये माइल्ड डायबिटीज नहीं है एक्चुअली, ये माइल्ड इंक्रीज इन ग्लूकोज है खाली। डायबिटीज एक बहुत कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसका ग्लूकोज बढ़ना एक इम्पॉर्टेंट हॉलमार्क फीचर है जिसकी वजह से हम डायग्नोज करते हैं। पर जिस दिन बॉडी में डायबिटीज मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट शुरू होती हैं जिनसे डायबिटीज होती है, उसके पैरेलल बहुत सारी और चीजें डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, हार्ट पे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, और हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये सारे रिस्क प्री डायबिटीज फेज में ही शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट जिस लेवल पे हम डायबिटीज को डायग्नोज करते हैं, जिस कट ऑफ लेवल पे कि शुगर 126 से ऊपर होनी चाहिए फास्टिंग, और खाने के बाद की जो शुगर है 200 से ऊपर होनी चाहिए डायबिटीज डायग्नोज करने के लिए, उस लेवल पे ऑलरेडी 10 से 12% लोगों को आइस की कॉम्प्लिकेशन शुरू हो चुकी है, किडनी की भी कॉम्प्लिकेशन अर्ली शुरू होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि अगर आप ये बॉर्डर लाइन जोन में किसी को डिटेक्ट करते हैं तो ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए टू इंटरवीन अर्ली, इंटरवीन एग्रेसिवली एंड पुश बैक द डिजीज प्रोसेस। हम इस फेज में अगर एक्टिवली किसी को डायग्नोस करके मैनेज करते हैं तो हम डायबिटीज को रिवर्सल की तरफ ले जा सकते हैं, एटलीस्ट रेमिशन में ले जा सकते हैं। और डायबिटीज की एक जो ट्रीटमेंट की ब्यूटी है कि अगर आप शुरू में अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं ग्लूकोज लेवल्स को, तो उसका एक लॉन्ग टर्म लेगेसी इफेक्ट आता है। जितना आप शुरू में अच्छा कंट्रोल लेके चलते हैं उतनी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपकी 30-40 साल बाद भी कम होती हैं। अगर शुरू के 5-7 साल आप खराब कर देते हैं कंट्रोल खराब करके, तो आपकी कॉम्प्लिकेशंस भी जल्दी होती हैं और ज्यादा होती हैं। तो ये फेज जो है इसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट स्क्रीनिंग के थ्रू हमें इस फेज में लोगों को डायग्नोस करने की कोशिश करनी चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए कि ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि आपको जल्दी पता चल गया है कि अभी आप बॉर्डर लाइन जोन में हो, और आपको इसको मैनेज करना चाहिए एग्रेसिवली ताकि आप इसको बढ़ने नहीं दें और इसके साथ जो होने वाली कॉम्प्लिकेशन है उससे बच सकें। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे अभी डॉक्टर सहाय, डॉक्टर मक्कर ने बताया है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस काफी आमतौर पे जो है जल्दी शुरू हो जाती है, तो आपका क्या कहना है कि इसकी स्क्रीनिंग हमने कब शुरू करनी चाहिए और क्या टेस्ट हमने करने चाहिए जिससे हम मॉनिटर कर सके कि कॉम्प्लिकेशंस शुरुआत हो रही है नहीं हो रही है, कितने फ्रीक्वेंसी के साथ हमने मॉनिटरिंग करना चाहिए। खास करके हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हर एक चीज का खर्चा काफी मायने रखता है और हेल्थ स्पेंडिंग के ऊपर काफी इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि सबके पास इंश्योरेंस नहीं होता है और ओपीडी ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करना सबके लिए थोड़ा सा भारी जाता है। तो आपका क्या कहना है कि हमने कितने फ्रीक्वेंटली करना चाहिए और कौन से टेस्ट करने चाहिए रूटीनली?
तो जैसे डॉक्टर मक्कर ने अभी बताया है कि डायबिटीज़ के पहले काफ़ी समय तक प्री डायबिटीज़ फेज भी रहता है, और इसी समय पर काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हर डायबिटिक को जब भी डायबिटीज़ का पता चलता है, उनको ये स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस के लिए सिंपल सिंपल स्क्रीनिंग टेस्ट। एक तो ये है कि आँखों का चेक कराना है, आँखों का रेटिनोपैथी के लिए। ये नहीं है कि जो है आप आपका रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, बट ये जो आँखों के पीछे जो रेटिना होती है उसकी उस पे डायबिटीज़ का असर पड़ता है। तो उसके लिए उसकी एग्ज़ामिनेशन करना है एक बार, जाँच के डायबिटीज़ पहचानने के टाइम पर ही करना है अपने को, डायबिटीज़ के ऑनसेट पे ही करना है। उसके अलावा हम लिपिड्स जो मतलब कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करना है। उसके अलावा आपके पैरों का जांच करना है, मतलब सुनपन अगर हो तो उसके लिए खास तौर से थोड़ा सा और केयर लेना है डायबिटीज अपने फीट के ऊपर। और उसके अलावा किडनीज का भी जांच करना है। किडनीज का जांच जो रूटीन जांच होते हैं, मतलब क्रिएटिनिन का टेस्ट होता है और एल्ब्यूमिन का टेस्ट होता है यूरिन में। तो ये टेस्ट ज़रूरी है। ऑल्दो डॉक्टर संजय ने बताया कि जो है इसका सबका कुछ कॉस्ट होता है, लेकिन आप अगर देखते हैं, ये अगर आप ये खर्चा पहले करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी मच प्रिवेंटेबल। यानी कि अगर आप जल्दी पहचानते हैं तो इनको सबको रोक सकते हैं, और इनके वजह से जो प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उन सभी को आप रोक सकते हैं, और उससे जो खर्चा होने वाला है उसको आप काफ़ी हद तक सेविंग हो जाती है आपकी, अगर आप पहले ही जांच कर लेते हैं तो। थैंक यू राकेश। ब्रिज, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने काफी काम जो है, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क इन ओबेसिटी एरिया, एंड यू रिकॉग्नाइज्ड एज एन ओबेसिटी कंसल्टेंट इन इंडिया. We know the interrelationship between obesity, diabetes, and both can interchangeably have an impact on each other. What is your advice to all these people in terms of lifestyle changes that you need to effect, so that the weight and the diabetes interrelationship can be improved on through lifestyle changes? So what would be a mantra, or let's say 10 points that you would like to tell people, the benefits of these, in terms of helping obesity, diabetes, and the cascading problems related to all these two diseases? So good question, Sanjay. And question of my liking, in fact. सो ओबेसिटी या मोटापा जो है एक मेजर बीमारी है। ये एक सबसे पहली चीज़ तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि मोटापा जो है एक कॉस्मेटिक या खाली एक दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है। ये एक मेजर बीमारी है जिसकी वजह से हमें बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं। सो ओबेसिटी इज कंसिडर्ड मदर ऑफ ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉर्टेंट डिजीजेज ऑफ एडल्ट लाइफ. Obesity predisposes to more than 200 different diseases, which include diabetes, blood pressure, heart disease, uh, you know, joint disorders, and multiple cancers also. अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डायबिटीज़ की जो एसोसिएशन है ओबेसिटी के साथ, वो सबसे स्ट्रांग है। और आज की डेट में हम ये मानते हैं कि क्योंकि ओबेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि मोटापा बढ़ रहा है, वो एक मेजर ड्राइवर है जो डायबिटीज़ की प्रेवलेंस को बढ़ाता जा रहा है। अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स को अगर एनालाइज करें, उनका बॉडी वेट या बॉडी मास इंडेक्स देखें, तो ऑलमोस्ट 70 to 80% जो टाइप 2 डायबिटीज़ के लोग हैं, उनका वेट जितना नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा है। और खाली वेट नहीं, बेसिकली वेट हमारा इनडायरेक्ट इंडिकेटर है, उनके बॉडी में फैट की परसेंटेज ज़्यादा है, जो चर्बी है वो ज़्यादा है। और जब भी ये फैट ज़्यादा होती है तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू होते हैं, और उसमें से एक साइड इफ़ेक्ट्स ये भी है जो आपके पैनक्रियास और लिवर पे इम्पैक्ट करता है। जो एक्स्ट्रा चर्बी जब एबनॉर्मल जगहों पे जमा होती है तो वो उन ऑर्गन्स के फंक्शन को ख़राब करती है, और उन ऑर्गन्स में पैनक्रियास और लिवर भी हैं, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज़ होती है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ओबेसिटी के साथ और क्या इश्यूज होते हैं। ओबेसिटी की वजह से आपका हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो हार्ट पे इम्पैक्ट आता है, हार्ट का साइज बढ़ता है, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं, किडनी डिजीज के चांसेस बढ़ते हैं,
कैंसर्स के चांसेस बढ़ते हैं, और ये सारी चीज़ें डायबिटीज़ के साथ भी बढ़ती हैं। ये दोनों इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर्स हैं ये बहुत सारी बीमारियों के, और जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो सिचुएशन और बहुत बुरी तरह से खराब होती है, रिस्क जो है सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। अभी करंट टाइम्स में हम देख रहे हैं कि लिवर डिजीज जो है, क्रॉनिक लिवर डिजीज का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, और उसमें एक मेजर रोल जो है फैटी लिवर जो होता है इनिशियल फेज ऑफ डायबिटीज और ओबेसिटी में जो बढ़ता जाता है, उसकी वजह से बढ़ रही है। तो हर पेशेंट, हर वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज है, उसको सबसे पहली चीज अपने वेट पे जरूर ध्यान देना चाहिए। उसको ये देखना चाहिए कि उसका वेट कितना है, उसकी हाइट के हिसाब से ज्यादा है या नहीं है, उसके लिवर में फैट जमा है कि नहीं है, और ये फैक्टर्स को देखते हुए उसको अपने वेट को नॉर्मल की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए अगर ज्यादा है तो, जो कि 70 to 80% लोगों में ज्यादा होता है। अब इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या हर व्यक्ति उस वेट को नॉर्मल पे ला सकता है? आंसर ये है कि अनफॉर्चुनेटली बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वेट लॉस जो है एक बड़ी डिफिकल्ट चीज है, और जब आप लूज करते हैं उसके बाद फिर गेन करने की टेंडेंसी होती है। और आज की तारीख में हमारे पास बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ इंडिया में नहीं है वेट लॉस के लिए, इंडिया के बाहर हैं, शायद अगले 2 साल में 3 साल में हमारे पास भी आ जाएंगी, बट वो दवाइयाँ इतनी एक्सपेंसिव हैं कि मेजॉरिटी लोग उनको शायद अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अभी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको लाइफस्टाइल पे फोकस करना है। आपको अपना ईटिंग बिहेवियर ऐसा रखना है कि आप एक्सेस कैलोरीज बिल्कुल नहीं खा रहे हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, मॉडरेट जो होना चाहिए सिस्टम खाने का वो खाते हैं, बिंज ईटिंग नहीं करते हैं, एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शंस लेते हैं खाने में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट की, कैलोरी डेंस फूड्स नहीं खाते हैं, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रखते हैं, और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी रखते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अपना वेट रेगुलरली चेक करते हैं। अगर किसी का वेट ज़्यादा है, आइडियली हम रिकमेंड करते हैं कि आप रोज़ अपना वेट चेक करिए। रोज़ नहीं करना चाहते, हफ्ते के हफ्ते करिए, ताकि आपको पता हो कि आपका वेट किस डायरेक्शन में जा रहा है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो दूसरी समझने की है कि अगर कोई 5% भी अपना वेट लूज कम कर लेता है, दैट मीन्स 100 से वो 95 पे आ जाता है, चाहे उसका आइडियल बॉडी वेट 65 हो, वो 5 किलो वेट लूज करने से भी उसके मेटाबॉलिक पैरामीटर जो हैं 80 to 90% इम्प्रूव कर जाते हैं। उसका शुगर लेवल इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उसका कोलेस्ट्रॉल इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, उसका हार्ट की प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाता है। और कोई अगर 10 से 15% वेट लूज करता है तो उसकी सारी जो बीमारियां हैं उनका रिस्क 90-95% तक कम हो जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जिसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, और हर वो व्यक्ति जिसको डायबिटीज है और जिसका वेट ज्यादा है, उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वेट को जितना कम कर सके करे, और वेट कम करने के बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको वापस बढ़ने दें। Thank you very much, Brij. Since we're running out of time, we've just got a couple of minutes. So I'm going to request both of you to be very brief. Rakesh, I'm going to come back to you. And I want you to speak a little briefly on the importance of glucose monitoring, because that's something, people who have diabetes need to know about, that what types of monitoring are there, how frequently should we be doing it. So in a very brief sort of, education, if you can just tell us something about it. Yeah. So the most important thing is that monitoring is the most important aspect of diabetes management, because what happens is unless you check, test, you don't know what the blood glucose level is. As we said, that your blood glucose will be high. You may not know it at all because, yeah, because it doesn't cause any symptoms unless it is very high. It is more than 300 or 400. Then it can cause some symptoms. But other than that, it may not be have causing any symptoms. So it's very important that everybody checks. And today it is very easy to check for it because you've got glucometers which can be used, and within 5 seconds they give you a reading which is reasonably accurate, very good. And if you're doing it properly, you don't have to worry much about the accuracy of that. All of the machines are good. And what you need to do is that you need to check this, because many times people are worried about the readings. They think that, oh, if I see a higher reading, then I'll be worried, I'll be scared. I mean, he gets scared and all that. So it's not important. It is important to know that all this is affected by your diet, by your exercise. By just making small changes in your diet, you can bring the sugar readings under control. So it is very important that you check and monitor frequently. Do it at least 1 or 2 times in a day. Ideally, we may say that, do it 6 times in a day, before and after every meal. But at least 1 or 2 times in a day, if you do it, you will be getting a lot of information.
And then we have something which is more advanced than that, which is called as a continuous glucose monitoring. So that is a small sensor which is kept on your arm, and that keeps recording your blood glucose levels every 5 minutes. It is actually measuring the interstitial glucose, but it is adjusted to the blood glucose, and we can see that either immediately, or sometimes you have other machines which can, you go to the doctor and you can see the last few days how the record has been. They are typically used for about 14 days, and they give you a lot of information, because that can help you in understanding what is happening to your blood glucose with food, what is happening with exercise, what is happening with different types of food. So by looking at that, by understanding that, you get a lot of information about changing how you can change your lifestyle and make it better in terms of, keep your blood sugar controlled with just changes in your lifestyle. Apart from that, Thank, medicines to be changed, your doctor will do that for you. thank you so much. I'll take the last question now because we've run out of time, and that's to you, Brij. And I just putting a little in the broader perspective that a lot of people, we put them on oral medications for control, but we end up often giving multiple drugs to the patients. It's not, when you look at the typical prescription of a patient who's having sugars for almost about 5-10 years, you'll see that they have almost about 10 different drugs that they tend to have. And the question is always that, can you step down my doses of medications? So do you think that really we need to prescribe multiple drugs to control diabetes, and why do we need to have multiple drugs on a prescription for a patient who's been having abnormal blood glucose for a long time? And as a second part of this question, often we need to start patients on insulin, and they're most resistant to the idea that I need to take insulin, and they're often very they protest a lot about it. So when do you think it's the appropriate moment that we need to start patients on insulin? So I'll try, I would like you to be very brief because we run out of time, but if you can give some couple of highlights about what we should do. So this is again, very important aspect of treatment. So there are two or three components of prescription. The first part of prescription is that we have to control glucose level. Whatever I am talking is in addition to lifestyle intervention, which we are not touching upon. So lifestyle intervention and diabetes education and monitoring are key part of treatment. Now prescription, first component of the prescription is controlling glucose level. Second component of the prescription is controlling the comorbidities. So when we investigate these patients, there are a lot of patients who will be having abnormal cholesterol level, abnormal thyroid hormone levels, abnormal vitamin D levels, high blood pressure, weight is an issue. So multiple problems are there, which need to be addressed simultaneously. For benefit of all the viewers, one should keep in mind that 75% of people with diabetes die of a heart attack. And if we are treating them properly, and if we are giving all of them statin as indicated, then this risk can be reduced to almost 20 to 30%. It can be significantly reduced. Now, so we have to just not look at the glucose levels. We have to look at patient as whole and reduce the risk of complications also. Second thing is, diabetes is a progressive disease. So today we are able to control with one drug. Maybe after a year or 2 years, we need to add another drug. Maybe after 3 to 4 years, we need to add another drug. And then finally, when nothing else is working, we need to add insulin. Now, most important thing here to make patient understand is controlling glucose level is important. Not the means of control of glucose important is not important. Really concerned. So whatever is needed, we have to do to control glucose, whether we need oral medication, multiple, or add-on insulin. Because if we don't control glucose, they are bound to get into long-term complications, which will occur in next 5 to 7 years or 10 years, and which can affect them in prime of life. So controlling glucose is important. There you need multiple drugs. Most of the people will need some drugs to reduce blood pressure, some medication to reduce cholesterol levels. Maybe almost 20 to 30% require a thyroid hormone. Good number of them require vitamin D, calcium supplementation.
Then we have to look at kidneys. That almost 30% people have some abnormality at the kidney function. There is good prevalence of presence of heart disease, or early heart failure. So we have to protect these people from complications. So usually most of the people will require multiple drugs to address all the possible issues that can complicate the life of a person living with diabetes. And I think we have to tell them in detail, we have to educate them why we are using so many medications, and most of the people understand and they follow that also. But diabetes education plays a very important role here, in inducing compliance at the patient level. Thank you very much, Brij. I think we've had a very stimulating discussion, and we've, in a very short span of time, covered so many aspects of diabetes care. I'm sure there will be tons of questions which will still be there, but we'll be very happy to answer it in our subsequent programs, or even if you do send us a communication on the RSSDI mails. I'm sure we'll be very happy to extend our support to these questions. So I'm going to hand this back to Dr. Purvi and ask her to give a concluding remarks. Thank you very much, Purvi, for this So opportunity. just before we conclude, Dr. Sanjay, just before we conclude, I would like to tell all our viewers that there's a lot of information available on the internet, but don't believe all these sites. Go to the RSSDA website. You've got a lot of information given by experts in diabetes. So please go to the RSSDA website. Dr. Sanjay has put in a lot of effort in developing the website. Please go there, and whatever you want to know about diabetes, look at the RSSDA website, rssdi.in. Thank Dr. you very Sanjay, much, would you like? Rakesh. Thank you so much. I think that's a resource that we have built up with so many experts, and we have got very authentic information there, and we'll keep updating it all the time. I'm sure you'll find whatever questions you have answers out there, and if you don't, feel free to talk to us, and we'll be happy to provide them. Thank you so much, Rakesh, for bringing this up. Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, over to you, Sir, Purvi. before we let you go, sir, Dr. Sanjay sir, I'd like to ask you one question. Is language important in patient education? Very much. I think you see although English and Hindi are common languages that we use in our clinics, but the patient feels most important when you speak to him in his language because he relates to it very easily. And there are sort of sections of conversation which is able to express only in his own language. So I feel that as far as possible, whenever we are talking to patients, and to make them more comfortable and conversationist, you need to see what language they're most comfortable in. So I, as a principal, do ask the patient what language you would like to converse in, which will make you comfortable and ask questions, and would be very happy if I know the language to speak in that language. Otherwise, excuse myself, but wherever you can, I think we should try and speak to them in their language. Very important message. Besides all the wonderful messages given out today, I think patients also need to remember that they must insist, if they have not understood something, they must insist to the doctor that they be explained in the language that they understand the best, and not just nod in front of the doctor and leave the office without getting to understand exactly what the doctor has said to you. So with that, I must thank each of you. That I think this was a really detailed discussion, even in such a short time, on the importance of education in the life of every diabetes patient. And yes, let's talk diabetes. We'll continue this series and bring forth lots of interesting programs. With that, it's my proud privilege and honor to thank Dr. Brij Mohan Makkar sir, Dr. Sanjay Agarwal sir, and Dr. Rakesh Sahay sir for being here today with us on RSSDI Diabetes Bytes. See you next week. Thank you so Thank you. much. Thank you, everyone, and good night. Thank you.